नमस्कार। आज हम अलजेब्रा के इस लेक्चर में फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म करेंगे एंड दिस इज द फर्स्ट थ्योरम ऑफ homomorphism and the statement of this theorem is the kernel of a group homomorphism is a normal subgroup. This is the statement of first theorem of homomorphism. तो सबसे पहले हम इसका homomorphism define करेंगे. So let f is mapping from G to G dash, and where G and G dash are groups, are any two groups, and this f is a homomorphism from G to G into G dash. So first of all, we will define normal this kernel of homomorphism. So we know the definition of kernel, and we write it as KERF. Kernel of F is nothing but is it contains elements of G domain. Domain के वो elements आएंगे जिनका image E dash आएगा. E dash is nothing but it is identity element of G dash. Okay. तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि दिस कर्नल इज नॉर्मल सबग्रुप. तो सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे? सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि ये जो कर्नल ऑफ एफ है, कर्नल ऑफ एफ आपका ऑब्वियस है, यहाँ पे किसका है? सबसेट ऑफ जी है. ठीक. नंबर टू, कर्नल ऑफ एफ जो है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए. नंबर थ्री, कर्नल ऑफ एफ इज सब ग्रुप ऑफ जी. एंड नंबर फोर, we will prove kernel of F is normal subgroup of G. Normal subgroup of G. तो ये हमें ये चार चीजें प्रूव करनी पड़ेगी, then our proof will be complete. So first thing is obvious, because kernel of F is nothing but it is a set of elements of G. So clearly kernel of F is subset of G. ठीक. Now the first thing is very clear. Now the second thing is non-emptiness. So we know that f of E is equal to E dash, where E is identity element of G. Identity element. Okay. So E dash G dash का है, तो ये रिजल्ट पढ़ रखा है. So definitely ये जो G का एलिमेंट है E, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो इट मीन दैट एटलीस्ट ये E जो है वो डेफिनेटली कर्नल ऑफ एफ को
बिलोंग करेगा। तो कम से कम ई तो इसके पास है ही। सो फ्रॉम दिस वी कैन से कि कर्नल ऑफ एफ इज नॉन एम्प्टी, इज नॉट इक्वल टू 5. Then now we will prove kernel of f is, now we will prove kernel of f is subgroup of G. तो सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें पता है सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे। ठीक, सो ए और बी दो एलिमेंट हमने कर्नल ऑफ एफ से ले लिए। एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव कि ए इंटू बी इनवर्स, वी हैव टू प्रूव ए इंटू बी इनवर्स भी कर्नल ऑफ एफ में आना चाहिए। तो हम यहाँ से चलेंगे दो एलिमेंट लेके और हमें ये प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर ए और बी कर्नल ऑफ एफ को बिलोंग कर रहे हैं तो ऑब्वियस है हमारे पास ये जो ए है इसकी इमेज भी ई डैश आएगी और बी की इमेज भी ई डैश आएगी, बिकॉज दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ कर्नल ऑफ एफ। कर्नल ऑफ एफ में वही एलिमेंट आते हैं जो इस कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। सो दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश। तो हम अगर वी आर क्लेमिंग दैट a and b are the elements of kernel of f, then definitely f of a भी e dash होना चाहिए और f of b भी e dash होना चाहिए। Now we have this, we have to show this belongs to kernel of f. It means that f of b inverse क्या आना चाहिए, e dash आना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो डेफिनेटली ये एलिमेंट जो है वो कर्नल ऑफ f को बिलोंग कर जाएगा। सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैं f of a into b inverse लेके चला। So can we write like f of a into f of b inverse? Yes, we can write. Why? Because f is homomorphism. Homomorphism, अगर homomorphism है तो डेफिनेटली ये लिखा जा सकता है। ठीक, और ये आपके पास e डैश के बराबर है। नाउ कैन वी राइट f of b raised to power minus 1? Yes, we can write because we have a result f of x inverse is equal to f of x whole inverse. Okay, so now e dash, and this is nothing but it is e dash. So e dash inverse, then e dash ka inverse we definitely e inverse aayega, and e inverse into e inverse is nothing but it is e. So what we get? We get image of a into v inverse, f of a into v inverse is e dash. So what we get from this? It means that a into v inverse is belongs to kernel of f. Okay, so from this we can say kernel of f is subgroup of G. Now these three things we have proved, ये भी प्रूव कर दिया है। अब हमारे पास बचता है कि ये कर्नल ऑफ f जो है वो नॉर्मल सबग्रुप प्रूव करना है। नाउ वी विल प्रूव कर्नल ऑफ f इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक एलिमेंट हम ले लेंगे कर्नल ऑफ एफ से और एक एलिमेंट ले लेंगे हम कैपिटल जी से। ठीक, दिस इज द प्रोसीजर, दिस इज सेट प्रोसीजर। सब ग्रुप प्रूव करना है तो दो एलिमेंट उसी से लेंगे, और अगर उसको नॉर्मल प्रूव करना है तो एक एलिमेंट जिसको नॉर्मल प्रूव करना है
एक उससे लेंगे और एक एलिमेंट हम जी से लेंगे। तो स्टूडेंट अगर ए अगर कर्नल ऑफ एफ को बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेटली एफ ऑफ ए जो है वो किसके बराबर आएगा, ई डैश के बराबर। ठीक, नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, दो एलिमेंट लिए हैं, देन वी हैव टू प्रूव जी इंटू ए इंटू जी इनवर्स शुड बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ। अगर ये चीज होल्ड कर गई देन डेफिनेटली वी कैन प्रूव दैट कि ये एफ ऑफ कर्नल ऑफ एफ जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है। सो व्हाट व्हेन कैन वी डू, कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि इसकी इमेज, इसकी जो इमेज है इस जी ए जी इनवर्स की, दैट शुड बी ई डैश। ओके, सो नाउ जिस तरह से हमने सब ग्रुप के केस में किया उसी प्रोसीजर को अडॉप्ट करेंगे हम। तो हम इसकी इमेज लेके चलेंगे। सो नाउ एफ ऑफ जी इंटू ए इंटू जी इनवर्स। सो अब एफ आपका होमोमॉर्फिज्म है तो वी कैन राइट एफ ऑफ जी इंटू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ cos f is homomorphism. ठीक, okay, now f of g as it is, and f of a is nothing but it is e dash, and this one. Now अगर हम इन दोनों को क्लब करते हैं बी दिस, बिकॉज एफ ऑफ जी जो है वो जी डैश को बिलोंग कर रहा है और ई डैश जो है वो वी जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट है, देन एफ ऑफ जी इंटू ई डैश डेफिनेटली एफ ऑफ जी के बराबर आएगा, बिकॉज ई डैश इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश, सो वी गेट एफ ऑफ जी। if we combine these two then we will get f of g, then f of g इनवर्स को हम ले सकते हैं f of g होल इनवर्स, then f of g into f of g inverse is nothing but it is e dash, because ये एलिमेंट है और ये उसका इनवर्स है। जब एलिमेंट इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। क्वेश्चन इज दैट आइडेंटिटी एलिमेंट जी का आएगा या जी डैश का आएगा, बिकॉज एफ ऑफ जी जो है वो जी डैश का एलिमेंट है, तो डेफिनेटली ये उस एलिमेंट का इनवर्स है। जी डैश के एलिमेंट्स आप एलिमेंट और उसका इनवर्स मल्टीप्लाई होगा तो एलिमेंट किसका आएगा, जी डैश का। सो डेफिनेटली एफ ऑफ g into a into g inverse is equal to e dash. So what we claim, what we get from this, so we get g into a into g inverse is belongs to kernel of f. So therefore kernel of f is normal subgroup of g. So this complete the proof. I hope you understand this. If you have any problem you can ask me, you can message me. Okay, so we have proved that the kernel of a group homomorphism is a normal subgroup. नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंड थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म करेंगे। सो थैंक यू।